Hello friends, welcome back to another amazing video. Today I am here with updates regarding the Arcade Facilitator program, and that is the deadline of the Facilitator program are now extended. So what are the new timeline? What are the new updates? I will be covering all the information is there on the screen. But before coming to that, I simply want to inform you that yes, I was offline since a long काफी time से मैंने videos upload नहीं की. But if you notice, in between I dropped a workshop, a live workshop in collaboration with the Pisces, where we were talking about the agentic AI, MCP, and Gemini AI. Okay, so in the future we are upgrading ourselves, we are improving ourselves. Being notified is improving themselves in order to deliver you workshop which will actually contribute toward your career aspect. तो अब धीरे धीरे गूगल आर्केड से अपना फोकस हटाते हुए हम ऐसे कंपनी के साथ कोलैबोरेट करने वाले हैं फ्यूचर में जो आपको वर्कशॉप कंडक्ट कराएंगे हैंड्स ऑन, फ्रॉम वेयर यू वुड बी गेटिंग इंफॉर्मेशन विच विल एक्चुअली कंट्रीब्यूट इन योर करियर एस्पेक्ट. तो आप वहां से सीख रहे होगे, तो गूगल आर्केड भी चलेगा बट साइड बाय साइड और ज्यादा प्रोमिनेंट मोर प्रैक्टिकल चीजें हम आपके साथ फ्यूचर में लाने वाले हैं. सो मेक श्योर यू स्टे कनेक्ट विद अस, मेक श्योर यू सब्सक्राइब. तो कहीं भी जाना नहीं है क्योंकि फ्यूचर में काफी अमेजिंग वर्कशॉप्स आने वाली है. मे बी उडो or maybe Snapchat is coming with us to collaborate. So yes, let's stay tuned. So now come back to the important information that what are the new timeline? What are the new extended timeline? So the new extended timeline are as follow. So till now, the Arcade Festival program was starting from the 2nd August and going to be end up on the 6th of the October, that is tomorrow. But now the new timeline is that it will end on the 13th of the October, end of the day. So you have more 8 days to contribute in this program. So now first confusion is there. What is Arcade Festival program and what is Arcade's normal season 2? Because the deadline for the Arcade season 2 is December, the end of the December month. But for the Facilitator program, the deadline is 13th of the October. So what is the Facilitator program and what is Arcade season 2? What is the difference? So the Facilitator program let you contribute towards this particular milestone chart. Apologies for the quality of this chart. Image itni blurry hai, but still you may be able to understand things. So during this facilitator program, if you complete the arcade games, trivias, and skill batches in particular order, then you would be getting the bonus arcade points, which will further help you to reach the highest swag tier, which is on the 95 arcade points. So the deadline for this particular arcade tier, which is Arcade Legend, is December end of the month. But the deadline to contribute in this particular bonus milestone is 13th of the October. तो 13th of the October तक आप जो भी आर्केड गेम्स या ट्रिवियास गेम्स करोगे उनके लिए आपको नॉर्मल पॉइंट्स तो मिलेंगे, बट साथ ही साथ आपको एक पर्टिकुलर सेशन में कंप्लीट करने पे बोनस पॉइंट भी मिलेंगे. हो सकता है आप सेकंड माइलस्टोन कंप्लीट कर लो 13th ऑफ द अक्टूबर तक, तो आपको 8 बोनस पॉइंट मिल जाएगा. अगर आपने 13th ऑफ द अक्टूबर तक फोर्थ माइलस्टोन या अल्टीमेट माइलस्टोन कंप्लीट कर लिया तो आपको 25 बोनस पॉइंट्स मिलेंगे. सो दैट इज द डिफरेंस. तो यही आर्केड बोनस पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे पुश करने में आर्केड लेजेंड माइलस्टोन तक. सो दिसंबर तक आपके पास टाइम रहेगा. आप सिंपली गेम कंप्लीट कर रहे होगे, नॉर्मली कंप्लीट कर रहे होगे, आपको नॉर्मल आर्केड पॉइंट्स मिलेंगे. यू विल बी गेटिंग द नॉर्मल आर्केड पॉइंट्स टिल द दिसंबर टू इन ऑर्डर टू गेट अचीव द आर्केड लेजेंड माइलस्टोन. बट उसको और ज्यादा फर्दर पुश करने के लिए जो आपको बोनस पॉइंट्स मिल रहे हैं वो आपको एक फैसिलिटेटर प्रोग्राम के थ्रू मिल रहे हैं, जिसमें आपको 2 बोनस पॉइंट, 8 बोनस पॉइंट, 15 बोनस पॉइंट या 25 बोनस पॉइंट्स मिल सकते हैं एट द एंड ऑफ द 13th अक्टूबर बेस्ड ऑन जिस भी आप माइलस्टोन में यहाँ पर आप लाइक कर रहे हो. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नाउ आपको 13th ऑफ द अक्टूबर तक ट्राई करना है, आप हाईएस्ट माइलस्टोन अचीव करो ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा बोनस पॉइंट मिल पाए. ज्यादा से ज्यादा बोनस पॉइंट मतलब ज्यादा से ज्यादा आप ग्रेटर लेजेंड टायर में पहुंच पाओगे और ज्यादा से ज्यादा प्रीमियम स्वैग्स और गुडीज क्लेम कर पाओगे. Okay, so now what you need to do, you need to complete arcade games, trivias game, and skill batches or left free courses. Now you will be easily able to access the trivias and game batches from here, but from where you will be able to access these skill batches? So I am here with my official website, which is already live from past 6 months, I guess. So yeah, this is the official website, beingnotified.netlify.app. यहाँ पर आपको कंप्लीट 84 स्किल बैचेस की लिस्ट दे रखी है. इफ यू क्लिक ऑन द स्किल बैचेस टैब, देन यू विल बी एबल टू एक्सेस ऑल द 84 स्किल बैचेस फ्रॉम हियर. Based on the difficulty level, you can filter them out and you can easily access them. Just click on the start learning button and it will redirect you to that particular skill batch course. तो यहाँ से आप एक एक करके सारे स्किल बैचेस कंप्लीट कर सकते हो. सेम फॉर द लेफ्ट फ्री कोर्सेज. लेफ्ट फ्री कोर्सेज भी यहाँ पर अपडेट हो चुके हैं. यहाँ से जाके आप सारे लेफ्ट फ्री कोर्सेज कंप्लीट कर पाओगे. सो इफ यू आर स्टिल अवे फ्रॉम योर मोस्ट prominent bonus point milestone, then you can do check out this video, complete all the trivias, games, and skill batches, left free courses in order to get the best bonus points tier. Okay, also the update says that arcade October level games, base camps,
ट्रिवियाज गेम्स विल बी काउंटेड टुवर्ड्स योर यूजर माइलस्टोन। तो ये जो माइलस्टोन है बोनस पॉइंट का, इसमें अक्टूबर मंथ के जो गेम्स, बेस कैंप्स, लेवल गेम्स ये रिलीज हुए हैं या ट्रिवियाज रिलीज हुए हैं, वो भी कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। तो अभी जाके आपको जो भी कुछ बचा है सब कुछ अपनी एनर्जी लगा देनी है, 13th ऑफ अक्टूबर तक सब कुछ कंप्लीट करना है। ज्यादा से ज्यादा गेम बैचेस, ज्यादा से ज्यादा स्किल बैचेस, इनमें फोकस करना है। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, देन डेफिनेटली रीच आउट टू मी इन माई कम्युनिटी, जस्ट और सिंपली drop a comment in the comment section of the video. I will be reverting back to your comments or the doubts. So do check it out and do drop your comments or queries in the comment box. Okay. So if you like the video, make sure hit the like button, press the subscribe button, and if you have any query, you can ask me in the comment box or on the WhatsApp group. Thank you very much. Goodbye.